So hello everyone. There are 30 around people that have registered for this course, and I'm really glad that 30 plus actually 30 plus students, 30 plus people are interested in learning story writing and concept development and its applications in novels, feature films, and screenplay. More about that will be taught by Mr. Bapu Sir Gogod sir himself in really detailed way possible. So uh, I'm really glad that we are doing this course. All of you are being part of this course because, as we know, all the funds that that have been collected through the fees of this course will be donated through to the Granddad Ashram, which is an old age home which works with the betterment of COVID affected senior citizens. So I'm really glad that you guys are part of this. So we will start with introduction of everyone. I guess sir will guide about it in Yes, yes, next few yes, minutes. yes, 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 yes. The first thing is I would like to thanks each and everybody who is part of this course क्योंकि काफी सारी चीजें हम in these 8 sessions we're going to understand और मैं अपने बारे में तो धीरे धीरे बता ही दूंगा अभी जैसे संस्कार ने मुझे बताया था ये इस आइडिया के बारे में समर स्कूल के बारे में सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था क्योंकि आईआईटी के स्टूडेंट्स जो है जो कुछ सोचने वाले बंदे हैं कुछ करने वाले बंदे हैं तो उनके लिए अगर कुछ किया जा सकता तो इट वाज अ गुड आइडिया सो बेसिकली संस्कार I would like to understand or get an introduction of the sanskar for all the people, those who are from the IIT and those who are from not from the IIT. So we will begin introduction. So basically, I will tell you, I am Bapu Sarvagod, founder and director of Sense India Foundation, Media Research and Education Forum, and currently working on feature films and working on as a project consultant on various film projects. And also Mumbai University has invited me on the committee of filmmaking to start their department. And since 2002, we are conducting this kind of education courses in the campus of Mumbai University. And we have trained around 20,000 students in last 20 years. Anyway, तो काफ़ी सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे. तो we will start with introduction. See, this introduction is not just mean for my purpose because in this introduction हम हमारे क्लास के अंदर जितने भी लोग हैं उनके बारे में जानेंगे क्योंकि आगे जाके कुछ असाइनमेंट्स हमें ग्रुप में करनी है एक दूसरे को समझना है काफी सारा इंटरेक्शन होगा एक डिस्कशन होगा तो हमें हमारा जो कलीग है हमारा जो पार्टिसिपेंट्स है बैचमेट है क्लास में तो उसके बारे में पता होना जरूरी है तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपका नाम क्या है आप किस फैकल्टी में पढ़ रहे हैं आप कहाँ से है बेसिकली मतलब पुणे से है लखनऊ से है बिहार से तमिलनाडु से है ये बताना है और सिर्फ एक रीजन आप बताना है कि आपको राइटर क्यों बनना है उसका एक रीजन आपको आपके इंट्रोडक्शन में देना है तो इंट्रोडक्शन जितना ब्रीफ में रहेगा उतना अच्छा है ठीक है संस्कार ओके तो हेलो एवरीवन. जैसे सर ने बोला कि मुझसे शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन की तो मैं पहले बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना. तो हेलो मेरा नाम संस्कार है और मैं एक मराठी इंसान हूँ मतलब मैं महाराष्ट्र से हूँ एंड मैं मुंबई में रहता हूँ. मुंबई मतलब थाने में रहता हूँ. थाने इज़ नॉट मुंबई. थाने में रहता हूँ और मुझे राइटर क्यों बनना है तो बेसिकली मुझे लिखने से एक सेकंड मुझे लिखने से एक तरह की एक राहत मिलती है. अगर मैं स्ट्रेस में भी हूँ या फिर मैं खुशी में भी हूँ. जीवन के दोनों जो अपने पॉइंट्स होते हैं अलग जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे हम बोलते हैं अपोजिट पॉइंट्स होते हैं खुशी और गम दोनों में लिखते वक्त मुझे एक अच्छी चीज़ें महसूस होती है. दैट्स वाई मुझे लिखना है और उन चीज़ों को अच्छी तरह से लिखने के लिए मुझे किसी से सीखने की ज़रूरत है. इसलिए ये कोर्स को मैं अटेंड कर रहा हूँ. थैंक यू संस्कार
You can tell अगला कौन है, आप ही बताइए। आगे हाँ ठीक है, मैं एक एक करके लोगों के नाम लेते जाऊंगा, वैसे आप लोग इंट्रोडक्शन देते जाइएगा। हर्षवर्धन, हाँ हर्षवर्धन तुम इंट्रोडक्शन दे सकते हो। Yeah, good evening, sir, and good evening, everyone. My name is Harshvardhan Chandan Rajput. I reside from Kolhapur. So I'm pursuing in graduation for arts, that is BA first year. The only thing I want to become writer is just because of my passion. Many of people tell that writing cannot be your career, but I think I can do better in writing. And meanwhile, just to get the habit of writing, I write blogs, and I'm trying to write a book for which I have completed 30% of my story. Then in fact I want to become writer as only because of my passion, and I think I cannot do anything. Many people think that I can do various things, but I think I cannot do anything except writing. So that's all from my side. Thank you. Well, Harshvardhan, interesting. नेक्स्ट अप वी हैव मनोज यादव। मनोज यादव आप बताइए आपके बारे में थोड़ा। Yeah. Hi, my name is Manoj. So basically, I'm a PhD student in Energy Science and Engineering Department, and I belong to Chhattisgarh. So why I've chosen this class or this script writing and story writing is because I think I've chosen a career where I have it a lot as a scientific literature and scientific publications. And to improve my writing and include the part or basically improve the concepts and the presentation of my thoughts, I've joined this class. Okay, that's really different way to look at the things. Actually, I never realized that someone might have registered for that purpose also. But it's really great to see you. Next up, we have Almas. Almas, can you please introduce yourself? Yeah. Hello. I'm Almas Salma. I'm a fresher in chemical engineering department. I'm from Kochi in Kerala. So the reason why I write, yeah. Sugandhanya. Huh? Sugandhanya. Yes, Sugandhanya. Yes. So the reason why I write is that it's better to document all the emotions so that once I grow up and when I look back, I can see how I evolved. Right now, if I go back to my diary and see whatever I felt as a child, it's interesting to read that. So documenting my personal self is a motive that I have. And so like I maintain blog for that stuff. But more of it professionally have not been trained much except for the curriculum that we had in school. So it's coming out to be, I wanted to pursue humanities as well while I was in 11th. So now, like, since I chose engineering, I didn't have an option. So I think it's nice way to go along with the study. So yeah, looking forward to it. Thank you. Yes, thank you, Almas. Okay, so next up we have Yukta Shri. So Yukta Shri, can you please introduce yourself? Is Yukta Shri here? Hello. Okay, so moving on, I guess we'll come to her later. Next. Yes, next up we have Aditya Ola. Aditya, can you please introduce yourself? Yes. Good evening, sir. My name is Aditya Ola. I am from Civil Department, freshie student. Basically, I belongs to Rajasthan, and I choose this course because writing helps us to express yourself in better way, and I want to express all my thoughts in a proper manner, and I choose because I'm very much interested in toward the writings and in the filmmaking. Thank you. Wow, that's really great of you, Aditya. Yes. Next up, we have Adityan R. I don't know. Adityan, are you there? Yes. Yeah. Good evening, sir. Good evening, ma'am. My name is Adityan. I am a I was a freshie in Meta department, and I am from Palakkad, Kerala. I wish to be part of this session because one of the things in my bucket list is to write at least a script for a feature film.
Oh, great. Great. That's really great, actually. That's really great. Can Aditya, can you tell me who is your favorite filmmaker in Malayalam? In Malayalam, in script wise, I guess I'm a fan of Srinivasan. Oh, great. Well, we'll talk about that later on. Yeah. Okay, next. Okay, so next up we have Raghuram Chakravarti. Hello, Raghuram. You are here, right? Yeah, hello. So I am Raghuram. I'm from Kerala and I'm in the electrical department. I'm a freshie. The reason I wanted to write, I can express my emotions like whenever I'm sad or happy. When I'm sad, I can pour out my emotions when I write, and the same with when I'm happy. And I can also be whatever I want. Like I can be a murderer. I can be the president of India. I can do whatever I want when I'm writing. Yes, yes, yes. That doesn't happen in real life. That's a really great perspective, Raghuram. That's a really great perspective. I mean, yes, you can be a murderer, metaphorically. Okay, so next up we have Laksha. Laksha. Um, yes, Laksha, kindly introduce yourself. Hi, I'm Laksh Gupta from Delhi. I'm a freshman in the computer science department. Um, I wanted to write because I've been exploring ways to express myself better. I've tried drawing, painting, music before, but I'm really bad at all these things. So I'm exploring writing as a way to express myself. Yes, way to express yourselves. Okay, next up we have Mandar Utaukar. Basically, okay, so I'm really not sure if Mandar. I guess- Mandar is basically Neha. Neha, yes, Neha ji, आप kindly introduce yourself. I guess वो वहाँ पे शायद अवेलेबल नहीं है अभी. Okay, next up we have Mukesh Kumar. Hi everybody. Good evening. Yes. Mukesh Kumar Vishal. I'm audible. Yes. Yes. So I am Mukesh Kumar Vishal, and I am pursuing my PhD in CSRE department. First time I saw this course in IIT, and earlier, like by seeing many web series, which is based on crime and like many nonsense themes, especially they are pushing mainstream, and not much things is coming of this country, science tech, and some other. So that's why I thought my idea, I thought to take this course, not like technological change in mainstream of like our society. Great. Moving on, next up we have Omkar Patil. Hello, Omkar. Yes. Rishi. I'm from Kolhapur, Maharashtra. And why did I take this course? Because I love movies and series based on their scripts. So my initial thinking of judging any story or series was how's their script, and I really when I really like such a movie, I think about
if I could write something which could possibly become a book or a series to this course. And I also like I also this course will also improve that skill. Yeah, that's it. Great, great. So that's actually a great perspective. Actually, uh, judging a movie or a web series based on its script, I think all of us really do that on really great scale, but we don't really acknowledge it. Next up, we have Rujuta. Hello, Rujuta. But during pandemic, I am currently and by taking up this course, I am hoping to get good guidance in expressing myself. So since a young age, I was hoping that I mean every time I face some real life incidents or see a movie or read a book, I have. I have had an avalanche of ideas coming to me, which I wanted to express a story or a book or something like that, but it didn't come through and I couldn't pursue my passion as of now. But I do have some ideas which I want to write about. So I'm hoping I'll get good guidance, and with a structured course like this, I mean I can actually take time out and pursue my passion. Okay, thank you. Well, we'll try our best. Okay, so next up we have Sandhya ma'am. Sandhya ma'am, first of all, I'd like to take this moment and tell everyone that Sandhya ma'am is, I guess, the eldest person here in this classroom, maybe. And she is also taking this course with us. So we hope we could learn from her in upcoming weeks also, as well as we will learn from Mr. Bapu Sarvagod sir also. Yes. Sandhya ma'am. I'm only 20 with experience of 40 years. That's really great. So my name is Dr. Sandhya Advani. I work as a POSH consultant and trainer. POSH stands for Prevention of Sexual Harassment of Women at the Workplace. So I conduct trainings in that. Now the reason why I'm joining this course is to tell better stories. Now telling better stories is going to help me in my training. It will help me in writing better articles. It will help me in creating better videos for my content. And at some point of time, I would like to write my autobiography. Oh, great. So that's the purpose of joining this course. Okay, ma'am. Even wow. We'd really love to get to know you better in upcoming weeks, actually, and really grateful that you are part of this course. I should really thank Mr. Bapu Sarvagod here that somehow you guys are in touch and you are part of this course, and we as students are learning from you. So Thank you next so up, much. yes. Pleasure is mine to interact with everyone. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Next up, we have Sankar. Hello, Sankar. Okay, I guess we can move on to Satish. Satish, आप यहाँ पे हो? Satish. Hello. Hi. Yes. Hello, everyone. I am Satish Kumar. I am a third-year undergraduate student of Bachelor's of Science in Mathematics Department, IIT Bombay. मैं सीतामढ़ी बिहार का निवासी हूँ. And personally, I feel whatever I learn and whatever my ideas and thoughts are, they get lost and they are not utilized to its full potential unless I write it down. So I want to pursue this course to actually make descriptive stories out of those thoughts of mine. Thank you. Satish, thank you for joining. Great,
Great, Satish. So next up we have Saurabh Maiskar. Saurabh. Good evening, sir. Good evening, everybody. I am Saurabh Maiskar. I hail from Nagpur, Maharashtra. I am in my final year of chemical engineering at IIT Bombay. And the reason that I have joined this module is because of my friends, actually. Some of my friends are really good at storytelling. They tell in such a manner that it's really captivating. So that is a skill that I want to instill in myself. And I also happened to attend sir's demo lecture, which one I loved it so much. So that's the reason I have registered for this course. My focus is to keep myself busy and learn something new. So that's the reason I have joined this module. Thank you. Great, great. Next up we have, yes, sir. Okay, so next up we have Shailendra Sharma. Good evening, everyone. I'm Shailendra Sharma. I'm audible? Yes, sir, you are audible. Yes. I am a practicing lawyer, advocate. Almost 20 years experience with large corporates in infrastructure, textiles, and Fortune 500 companies. Wow. I know Bapu sir from last 25 years. And last week I met him by luck after 15 years. And we were discussing that it's a time to change a real life experience into a real life. So Bapu sir told me about this course. You can join. It's an online virtual on Saturday, Sunday, 6 to 7 or 6 to 8. So I thought it's a very good idea. I will get some learning experience in script writing. And whatever idea I'm getting from universe, I was not able to convert it into script writing or a concept development. But I definitely now with Bapu sir's help, I will definitely convert these ideas to in a script writing or a concept development. And then we'll see what I can do further. Great. Actually, great. Thank you, Shailendra. And we are fortunate that there are 2 lawyers are there in our class. Yes. Okay. Ultimately, writing a script is like writing a study case of your in a court. So आगे it will be better. It will be helpful for me to certain things, and I can take a help from both of you, Sandhya Madam and Shailendra. Thank you. Thank you. Thank you actually, Shailendra, thank you. Shailendra sir. Next up we have Rutvik, Sri Rutvik. Hi everyone. Hello. Hello. Yes. You are audible. Yeah, I'm Rutvik from Hyderabad and I'm a freshie in mechanical department. The reason I took this course is I always wondered how this script working actually does. Actually, how does it work so efficiently? Like it just involves you in it. Like I want to narrate a story. I don't know how to keep all things correctly in such thing. So Great. I would like to learn. Yes, really great actually. That's what we will be learning in next few weeks. Next up we have Vasu Agarwal. Vasu, could you please introduce us about you? Hi everyone, I am Vasu Agarwal. I am currently living in Chandigarh, and I have written a couple of plays in the last 4 years, and I have learned the one thing I learned recently only was how different a play writing is from a novel or a film writing, जो मुझे बहुत धीरे-धीरे करके अभी realize होने लगा, and I'm trying to learn screenwriting specifically. So I hope I am looking forward to these lectures because मुझे लगता है कि मैं जो सीखना चाह रहा हूँ screenwriting के लिए मुझे यहाँ मिलेगा. Yes, you are at the right place, Vasu. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Vasu. Next up we have Vedant. Vedant, आप introduce कर सकते हैं खुद को, please. Hello everyone, I'm Vedant from Orange City, Nagpur, currently running into my 4th year undergraduate program. And I just really love writing, listening, and even performing.
I just love the process of thinking in any creative thing, be it a project of our college or be it writing. And the reason I am here is because till now I have done writing amateurly, but I wanted to look into it professionally. How does things go in the real world, and that too from someone who has been in the field for so long. So I'm really thrilled and excited to be given this opportunity. And honestly, it also feels very good to have people from so many different fields and age. So I'm really excited to be here. Thank you. Great. Great, Vedant. Great. Next up, we have Vijay Nag. Hi all. Good Hello, evening, sir. sir. Good evening, everybody. Yeah, thank you. And my name is Vijay Nag from Mumbai. And I've been into the IT information technology area for quite some time. I have been speaking on behalf of Microsoft Business Objects and SAP during my career. So I did a lot of speaking, especially on the marketing front and things like that. And I like to share my ideas with people, talk to them, but somehow I have never written them down. And in this program especially, I want to actually learn to write content, any content that would be exciting and engaging, and at the same time, provide value and some kind of an education to the people who read that content. I already do some content writing here and there, but I want to get in some more spice into it from the perspective that the readers really find it informative, useful, engaging, and exciting. Thank you all for this opportunity. Thank you, sir. Yeah. Wow. One thing I really liked. Yes. Yes, sir. Go ahead. I'm sorry. Yes. Actually, Vijay Nag was working with Microsoft, and he's having a lot of experience in IT field and education and social listening. So we are going to get definitely help from his knowledge during the discussion. Thank you, Vijay ji, for joining us. Thank you, sir. Yes. Next up, we have Vivek Prajapati. Vivek ji, आप please खुद को introduce कर दीजिए. Good evening, everybody. Am I audible? Yes. Yeah, actually, I am Vivek Prajapati, and currently I'm doing a PhD in Energy Science Department. This is my first year, and I am from Gorakhpur, Uttar Pradesh. And the question why I write is simply because it gives me happiness. And why this program? I want to create my own world. Own world means it's like a Marvel MCU, Marvel comic universe. And the main purpose of creating this fictional world, science fictional world, is to give the values and the learning which is inherited in our scriptures and our historical values. So I just want to amalgamate them and present them in a more scientific way, so that next generation and upcoming generation can accept them in a more simple and logical way. So this is my purpose for joining this program. Well, thank you. Great, Vivek. Next up, we have Yagya Sri Lakshmi. Hi. So I'm Yagna, and I'm an undergraduate in metallurgical department. So, and I'm from Delhi, basically. And I actually like reading books a lot. So ultimately, I idolize authors and the way they create stories. And whenever I have got an idea, I've struggled to give a structure to it, or how the arc actually forms and all. So that's why I think that's why I would want to become a writer and go through this course to help me. Interesting answers. We will try to explain that whatever questions you are facing. I hope. Yes. Yeah. Thank you. Next up, we have Yukti Gupta, the last one, the last introduction that we will be having.
Yeah, hello. My name is Yukti. I'm third year undergrad in physics. I'm from Bangalore. Uh, and yeah, I like writing mostly because I started reading, and then also like the authors and the way they frame certain situations into a very different emotion. Like they make you see the emotions they feel, which is pretty awesome. And obviously, I've tried to do that myself, but I obviously cannot find myself to be that good. So there definitely are some technical aspects that I think I would possibly want to learn. So for that, thank you. Okay. There are few people remaining actually. Shreya, could you please introduce yourself? If you Hi, I'm Shreya. I'm from Hyderabad. I'm in my third year right now. I mean, third year is completed. I'm glad to be here. Yes, Shreya. Thank you. I guess there were few people missed out because they were not available at that time. Or if anyone's introduction is remaining and they are here, kindly introduce yourself. Like Neha ma'am was remaining, I guess, if I'm not wrong. Neha ma'am and Yukta Shri, if Yukta Shri is here. Sir, if they are unable to connect, they might, as well put it in the chat whether they are able to communicate or not. Sometimes, the mics may not work or something. Yeah. I guess we can move forward with our class actually. Okay. So, see, while seeing the introduction, अभी आपने देखा कि कितना इंटरेस्टिंग है about the writing the stories and our thoughts. Because when you feel suffocated, when you feel uncomfortable within your mind and soul, then you feel that you should go for expressing. So this different age group, different likings, different geographical locations, and different cultures and different backgrounds. We know that we have been inspired with a cinema, we have been inspired with a literature, with story writing and other stuff. So in this course, see, why I'm very particular about. I'm very particular about this thing, introduction, because जब तक आप आगे आके बात नहीं करेंगे in the front of people, you won't able to understand what kind of expression you are going to deal with. Because ultimately, storytelling is what? Storytelling is a communication. Storytelling is a process to convey your message, to convey a certain thought. So in this course, see, क्योंकि हमारे पास काफी कम समय है, इसीलिए हमने सिर्फ एक ही रीजन आपको पूछा था कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट रीजन क्या है to join this course. But apart from this thing, work is to write 10 reasons that prompts you to write yourself, that prompts you to express yourself. ये बाद में आपको घर में अपना it's a homework. And out of these 10 reasons, you may feel that there are 4 reasons, 5 reasons, 6 reasons, or there can be a reason also. But to save the time, हमने यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही रीजन बताने को कहा था, जिसके लिए आपको ये कोर्स करना है. तो see,
जैसे ये स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Screen is visible. Okay. Okay. So screen is visible. And it is mentioned that idea to screen. Okay. तो आइडिया टू स्क्रीन का मतलब क्या है ये हम समझेंगे कि जैसे इन द बिगिनिंग, इन द इंट्रोडक्शन सेशन और इन द डेमो सेशन हमने कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज जो है उसके बारे में हमने समझने की कोशिश की थी कि जैसे अगर आपको याद है कि फीचर फिल्म है या सिनेमा डॉक्यूमेंट्री है या और कोई चीज है, तो कैटेगरी है सिनेमा की, तो वो कुछ भी हो मगर उसके पहले शुरू होती है दैट इज it gives a birth from some idea. तो यहाँ ये समझना है कि आइडिया से लेके उसका उस आइडिया को स्क्रीन तक पहुंचने का जो भी फासला है वो फासला क्या है. So it is very what you can say understood that idea is like a newborn baby. कि कोई भी एक कल्पना होती है, आइडिया होती है, तो उसे वो इतनी अहम होती है, उतनी इम्पोर्टेंट होती है कि उस आइडिया के ऊपर ही आगे का सारा प्रोजेक्शन डिपेंडेंट होता है. And that's why it is important to understand what is the idea, and you need to concentrate, you need to visualize idea, you need to write the draft again and again, and somehow we need to understand that idea is something like a newborn baby. So when we a newborn baby and for the cinema, तो आपको उस दिन मैंने जब डेमो सेशन में बताया था तो आपको याद रहा होगा कि सिनेमा की कैटेगरीज है. व्हाट काइंड ऑफ अ सिनेमा यू आर गोइंग टू मेक और व्हाट काइंड ऑफ अ कंसेप्ट यू आर गोइंग टू राइट इट. सो इट्स अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म, फीचर फिल्म, एड फिल्म एंड कॉर्पोरेट फिल्म, एनिमेशन. So I hope that basic एक बार फिर से बोलता हूँ, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा. डॉक्यूमेंट्री इज अ फिल्म. डॉक्यूमेंट्री इज द फैक्चुअल फिल्म which is based on the reality, which is based on the imagination, which is featured, which is a fiction, and the subject of the documentary based on any kind of stuff under in this universe. तो ऐसे कोई रूल नहीं है कि आपके फीचर फिल्म का सब्जेक्ट क्या होगा, वो कैसे डिसाइड होगा, या उसकी लेंथ कितनी होगी. सो फीचर फिल्म कैन बी फ्रॉम 1 minute to 1000 hours serial. There is no limit. Yes, sir. So जैसे हमने पहले ही हमें तय किया है, the role model of this of our course is based on the feature film. क्योंकि once you know that how to write a feature film, it means you can write all the rest of categories. Because feature film is the only category where you need to require to what is exact grammar of cinema. So grammar of cinema is what? It's an audio-visual language. And this audio-visual language, you need to understand. जैसे मैंने कहा कि this is a language which is understood by common people easily, because it's an inbuilt software to understand audio-visual language.
But if you tell them to express in that language, they won't able to express in that language. Yes. Okay. So Right. only the people who have understood the knowledge of grammar of cinema, they can only express in that particular way. So feature film, matlab feature films, fiction is directly adaptation of a novel or similar to the novel or a कादंबरी or उपन्यास. हमारा role model feature film. Then ad film, again we have discussed the ad film, which is जिसका base है make the profit, to promote the company, to make the huge profit for the corporates or the services. The corporate film, which is again about the presentation of your corporate, and you can say again it's a requirement of any corporate. And the animation films, which is based on the graphics, computer graphics, cell graphics, classical graphics, where the live shoot is not there. All the images and the scenes and the characters are computer generated images. तो आप देखेंगे कि ये जो एनिमेशन कैटेगरी है, sometimes it is used as a special effect. Nowadays, you can see that most of the Hollywood films, big budget films, they are shooting on the green screen or blue screen, and they are using an as a special effect. So Lord of the Rings, Titanic, Bahubali, Avatar, all these things, films are the best example of the animation. And again, now we will come to know that what is an idea. क्योंकि आइडिया अगर हमें ये 4 कैटेगरीज के लिए लिखनी है, तो पहले हमें ये तो समझना जरूरी है कि ये आइडिया होती क्या है. So we will stop this now. What you can say, screen share, and we'll have a discussion about an idea. Samskar, I want to see the people now. How can we see? Okay, now idea. Now my first question is कि कल्पना या आइडिया, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? जिसको भी आंसर देना है वो तुरंत चैट में अपना नाम संस्कार के पास सेंड करे, तो संस्कार विल टेल कि आंसर कौन करेगा. My question is, what is the meaning of an idea? मतलब क्या है? क्योंकि this will be a very important discussion. It's be thoda interactive on your side also, everyone. Yes. Because as we discuss, we'll get to know each other's perspective. So that's why. Yes. And it's not about getting the right answer, if I'm not wrong. Yes. Yeah. We need a different. We need different answers. Yes. So, okay, Sandhya ma'am will go first actually. Sandhya ma'am has had said her name. Yes. Okay. See, idea is basically a thought which comes to your mind. It could be the seed of creating something new. So that's what I think. It's just a thought that comes to your mind, or something which you feel can be, fruitful, or which can be put into practice. Well, who is the next one? Vijay sir will go next. Yeah.
Sir, I completely agree with what Madam said just now. In fact, it's on the same lines. An idea is a genesis of a thought, I would say. Like when the thought comes, I mean, even before that, there is something that strikes in your mind before which, before that you don't say that it is an idea. It is at that level. Next कौन है? Next up we had Vivek actually. Yes sir. Yes sir. What I think idea is like a kind of thought, that already ma'am and sir told. But what I feel like something keeps on going in our mind, and some thoughts came and it solves our problem. That's become an idea for us. Like a few moments ago, you itself said that one need to type their name in the chat box, and Sanskar will tell who will speak. Then there was a problem like a hodgepodge. कोई भी किसी के समय बोल सकता था, but एक idea आया that solves that problem, और सब लोग chat box में अपना नाम टाइप करेंगे, संस्कार will call, so इससे systematic का problem gets solved. That is a kind of idea, sir. What I feel. Practically काफी अच्छा समझा विवेक आपने. Thank you. Yes. Next up we have Harshavardhan Rajput. Yes, sir. As everyone said, this can be the idea can be your thoughts, but I want to add one more thing, that idea can be even your inspiration. Like you're fascinated with, like you're fascinated by a single thing, and you want to write a story on that. So you can write a story, and that can be your idea, and something that can be inspirational, and which can fascinate you, and which can involve you or evolve you the way you want. That's it. Next up, yes, Harshavardhan, that was a great perspective, actually getting inspired by something and getting fascinated by something and having an idea related to that. Next up, we have Mukesh Kumar. Ji. Hi, sir. Actually, like idea is very our own personal view, or we can say the content of cognition, like the main thing which one individual is thinking. So like it's personal thought. आप घर में ही है ना, ऑफिस में है? I have the same question. मास्क अनमास्क हो जाइए पहला. I had the same idea, sir. I mean, the same question. Okay. Whether he's sitting in public or Okay, next up, कौन आंसर देने वाला था? Rujuta. Rujuta was going to answer. Hello, Rujuta. So aspects have been already discussed about by participants. So there's one untouched aspect which I wanted to talk about. Was that Rujuta, Rujuta, your video should be on. Okay, sir. Yes, sir. I feel that idea is a subconscious. It's an inspiration in a sense, but it's an abstraction and subconscious thought that slowly we can give shape to, and it takes shape over some time, and with some work we can actually make it work it out as a story or a concept or a theme. And it can be an inspiration from real life events, or it could also be something very fictional or abstraction, or it could be anything. But we can let our imagination take a flight, and anything, as you said, anything under the theme of in this universe, it could be included in the. Yes, fantastic. I think so, Sanskar, these are the very important answers I'm getting. So let everybody speak that what are their ideas. Yes, who is next? Next up we have Manoj Yadav. Manoj, आप please answer कर दीजिए, आप mic on करके. Yeah. So what I think is, idea is just a thought with a lot of detail or a lot of concrete detail, so that it can be converted into action. So that's what I think.
I mean, we have to add a lot of detail to that simple thought, and then convert that idea with some kind of actionable thing, like this kind of course, like this course. Initially, someone have this idea that we should create a course of script writing for the IIT Bombay students, and then you have added a lot of detail, invited sir, and then now this idea is converted to action. So it's like that. Thanks. Yes. Yes. Thank you. Next up, we have Shailendra Sharma. Idea is basically what we hear, we sunte hain, what we see, what we read, what we experience in our life. Brain visualize that and generates an idea. Hello. Yes. I'm audible. Brain Yes. visualize that and generates an idea. Idea becomes in a circle. In a circle, addition and deletion happens through brain, and then we stop at certain point, and that certain point becomes an idea, and then concept writing or concept development or script writing becomes a further step to generate that idea into a professional or a commercial format. Basically, what we dream, that also becomes an idea. Well. Next. Thank you, Chinnu. Next up, we have Vasu Agarwal. I just believe idea is a thought that you feel is good enough or is worth upon pondering. You can execute it, you can thought of not executing it. It's just an interesting enough thought that you can ponder upon afterwards. It can be a conclusion after some observation. It can be a solution to a problem you are having right now. But idea for me is a simple thought that is just interesting enough that you ponder upon it. Well, fantastic. Next up, Sandhya ma'am wanted to speak again actually. Sandhya ma'am had some insights. Yeah. So I just want to say that all ideas are thoughts, but all thoughts are not ideas. So the idea that you may have may be productive, may be unproductive, but there is a difference between a thought and between an idea. So the origin of all ideas is thoughts, but origin of all thoughts is not ideas. Yes. मतलब पहले आपने सेशन कोर्ट में जवाब दिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट में. Okay, so we are coming to that because in your first answer itself you told that idea is basically a thought which comes to your mind. Okay, but fantastic, you have answered the different way also. अच्छा, और कोई एक है लास्ट आखिर का कि जो बात करना चाहता है? I guess वासु फिर से बात करना चाहते हैं. वासु, आप फिर से बात करना चाहते हो? Okay. नहीं, वो गलती से शायद रेज हैंड. अच्छा, ठीक है. और किसी को बात करनी है? Almas, do you want to speak something? I guess Almas may have. No, the thoughts I had were almost covered. It's just that the random thoughts that occur to us that might have a potential that we can work on. Just like it has been covered by most of the speakers. So I was like, well. Thank you. We will stop this answer session. Now, see, जब हमने ये समझने की कोशिश मीनिंग ऑफ एन आइडिया, तो किसी ने कहा आइडिया इज बेसिकली थॉट, आइडिया किसी ने कहा कि आइडिया इज विजुअलाइजेशन, आइडिया इज थिंकिंग प्रोसेस. कई सारे अलग अलग आंसर्स हमने सुने हैं. बट सी, all the answers are perfect, all the answers are correct in their own perspective, because see, in this course what we are trying to understand is that if you have a diamond in your hand, so when we call a diamond to the diamond, हम कब कह सकते हैं कि डायमंड को डायमंड है? उसको तराशने के बाद, at the end of the process. Exactly. The diamond is just a stone in the mind.
But unless you are not giving a dimensions or to that diamond, it doesn't take a value of the diamond. So idea is something like a diamond. Idea में आ जाती है, कोई कल्पना आती है, तो इसका मतलब है कि something valuable seed is there. Now, first thing we like to understand, where is our mind? अपने हार्ट में है, ब्रेन में है, आंखों में है, दिल में है, कहां पर है? One or two people can answer. Where is our mind? The brain, perhaps. Mind. Almas says it's brains. Brain, not brains. In the brain. Anyone else would like to take? Sandhya madam? Yeah, I think she's right, because the brain has got certain portions which allow you to think and which are responsible for various functions. So yes, Exactly. But our mind is into our breathing. जहाँ पे अपनी सांस, our breathing, सांस, श्वास, okay. जहाँ पे सांस रुक जाती है, जहाँ पे अपना breathing रुक जाता है, वहाँ पे लाइट बंद हो जाता है. So mind, then it is very relative कि वो अपने हृदय में है या ब्रेन में है या लेफ्ट ब्रेन में है या राइट ब्रेन में है. So initially in संस्कृत आत्मन वसते हृदय ऐसे कहा जाता है कि हृदय में बैठता है मन. So मन में कुछ आइडिया आती है और कुछ ब्रेन में भी आइडिया आ सकता है. यानी जब हमारे as you know that left brain and the right brain, now all the students of the science student, तो लेफ्ट ब्रेन का सोचना एक पर्टिकुलर रीजन के लिए है, लॉजिक के लिए है, कैलकुलेशंस के लिए है, मैथमेटिक्स के लिए है. राइट में एक जो ब्रेन है, राइट ब्रेन हैज अ डिफरेंट एप्लीकेशंस. सो इट इज डिपेंड ऑन एज पर ब्रेन में है तो वो लेफ्ट ब्रेन में है या राइट ब्रेन में है. तो डेफिनेटली एक गुलाब को अगर कोई देखता है और वो राइट ब्रेन में आता है थॉट, तो व्हाट कैन बी द थॉट कि ये गुलाब किसने किसे दिया, क्यों दिया, किस इमोशंस के साथ दिया. मगर वही अगर लेफ्ट ब्रेन में जाता है तो देन इट इज अ रेड गुलाब है, इसके केमिकल्स क्या होंगे, इसमें कितने कांटे लगे हैं, now what, how I can use into the medicine. So it means rather than emotions, you will start thinking about its application. So जब हमारे मन में कोई कल्पना आती है, देखो कि आइडिया को संस्कृत में कल्पना कहते हैं. तो कल्पना ये दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट चीजें. कि जैसे हम आइडिया और कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, वैसे कल्पना एंड संकल्पना इज अ डिफरेंट कंसेप्ट. सो जब हमारे मन में कोई एक तो आइडिया, वी डोंट नो कि उसका फेस कहाँ पर है, उसका हेड कहाँ पर है, टेल कहाँ पर है, और व्हाट कैन बी इट्स अ फॉर्म, और हाउ तरह से देखे. नो, जब तक हम हमारे आइडिया का कंसेप्ट में कन्वर्जन नहीं करते हैं, तब तक दैट आइडिया इज नॉट ऑफ एनी काइंड ऑफ यूज. सो कंसेप्चुलाइजेशन, कि जब हमारी कल्पना, जैसे हम बोलते हैं अरे कितनी अच्छी कल्पना है, इसकी कल्पना है, उसकी कल्पना है, मगर जब कल्पना संकल्पना बन जाती है, then it becomes a solid concept. So संकल्पना is what? संस्कारित कल्पना.
यानी डायमंड जब वो माइंड से निकलता है, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ स्टोन, रॉ स्टोन। तो उस क्या संस्कार किए जाते हैं, तो उसे तराशा जाता है, उसे पॉलिश किया जाता है, एंड you can see after a certain sanskar, after certain program, you can see in the form of diamond, and it becomes a sankalpana of a diamond, हीरा बन जाता है। So the thing is, when we are trying to understand what is the difference between the idea and concept, so before that we need to understand what is the idea. तो जो 7-8 लोगों ने आंसर्स दिए हैं आइडिया के, सो आइडिया बी एनीथिंग, वो आपके दिमाग में आए, दिल में आए, मन में आए, आपको मतलब जैसे न्यूटन को ऊपर से एप्पल नीचे गिर रहा था उस वक्त, उसे देख के आइडिया आया, कुछ भी आइडिया हो सकती है। एंड यू नो दैट all the religions, all the nations, all the concepts are the projection of somebody's idea. So idea concept में project होने के लिए, या from the concept when it comes into the physical form or when it comes into the practical form, और idea से कोई novel बनता है, कोई cinema बनता है, कोई then it's a process, and this process we will be trying to understand in this course. I mean, normally see why people go and see the films, कि एक scientist होता है and he is very intelligent or she is a very intelligent and she is always doing experiment in her lab or in his laboratory. How many people see the film and that film will be super hit? कितने लोग जाएंगे? सिर्फ IIT के लोग जाएंगे, कि उसमें क्या साइंटिफिक फंडा है देखने के लिए। सो जब तक उसमें एंटरटेनिंग वैल्यू नहीं रहेगी, जब तक उसमें इमोशंस नहीं रहेंगे, तब तक nobody is going to curiously going to see your film. और आपके रामायण और महाभारत में उसमें से आप अगर पोर्शन निकाल देते हैं तो सिर्फ महाभारत के युद्ध के लिए nobody is interested. आगे आगे जाके हम देखेंगे कि हाउ आवर वैदिक टेस्ट और माइथोलॉजिकल टेस्ट और हिस्टोरिकल टेक्स्ट इज certainly important in the content creation or the story creation. So when we are going to write our stories or our concept, first we need to understand that what is a value of our idea. So value of our idea is what? कि पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हमें अगर माइन में जाते हैं तो हमें क्या वो पत्थर मिला है, वो कॉपर है, वो सिल्वर है, या आयरन है, या गोल्ड है, या प्लैटिनम है, तक हमें पहले यह समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आइडिया, व्हाट इज द एक्चुअल आइडेंटिटी ऑफ दैट आइडिया। तब तक वी कैन नॉट वेस्ट आवर टाइम टू प्रोसेस दैट आइडिया इनटू द फर्दर स्टेप। बिकॉज अगर एक सिंपल पत्थर को हम डायमंड समझ के उसको तराशेंगे, आपकी मेहनत तो होगी, पीपल विल कंसिडर, बट अगेन इट विल नॉट बिकम अ डायमंड। So see, in the demonstration what we have discussed, India is the biggest country which is producing films, feature films, but उसमें से हार्डली कोई फिल्म होती है जो इंटरनेशनल नॉर्म्स में यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स की होती है। उसका कारण क्या है? उसका सिंपल कारण यही है, विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ द आइडियाज, without developing the ideas into the concept, they simply start working on the idea. And when you are trying to convert your ideas into the novel or into your autobiographies or web series or cinemas, first is we will have to understand that what exactly content or what is the scope of the material is there with your content or your idea.
सो साइंटिफिकली हर एक कोई संकल्पना होती है, हर कोई एक कंसेप्ट होती है. यू कैन नॉट चेंज द कंसेप्ट ऑफ और द फॉर्मूलाज और द उसका जो यूनिवर्सल फंडा है, यू कैन नॉट चेंज इट. मगर आप सिर्फ इमेजिनेशन में जा रहे हैं, आप कल्पना शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं फिर. सो जैसे डेमो सेशन में हमने क्या देखा था कि इंडियन ऑडियंस का जो माइंड सेट है और या जो उसका मेंटल एज है, इट इज ओनली अ 14 ईयर्स. 14 साल के बच्चे को, लड़के को, लड़की को, उसका जो रोमांटिक सोचना होता है, उसका जो इमेजिनेशन होता है, उसके एक्साइटमेंट के, उसके दुख के, दर्द के जो भी नॉर्म्स होते हैं, ऑल आवर स्टोरीज आर क्रिएटेड. See, I'm telling you one funda. क्योंकि कुछ बीच में मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताऊं. I was doing one tiger conservation course in Ranthambore Reserve, Tiger Reserve. तो वहां पर एक ब्रिटिश लेडी थी हमारे साथ, एंड इन बिटवीन हम लोग ऐसे कैजुअल डिस्कशन करते थे कि इंडियन सिनेमा, इंडियन कल्चर, इंडियन ये ऐसे इसमें. तो मिसेस कैथरीन, she asked me, in your Bollywood cinema, why people are always dancing? I told her, because they are in love, happy. Okay, they are happy, that's why they are dancing. But why the hell the girls behind these two people, they are dancing? And I was shocked. I told, they are also happy. Then she asked me, why the hell they are happy? Because of they are happy. तो उसका अपने पास कोई जवाब नहीं है. Now it's part of our imagination, it's a part of our adaptability कि अगर हीरो हीरोइन है तो ज्यादातर उनके पीछे अच्छी अच्छी लड़कियां, कभी अच्छे लड़के और कभी ग्रुप में लोग देते हैं. तो इमेजिनेशन में हम कुछ भी कर सकते हैं. बट व्हेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द impressive way, the academic way of writing, the creation of the story, and the creation of a content, and the actual, what you can say, the process of writing, then we will the basic fundamentals that what you can say, idea is a one process, then the second stage is a sankalpana or a concept. तो एक इमेजिनेशन या एक इसके लिए मैं एक आपको कहानी बताता हूँ, क्योंकि ऑलवेज स्टोरीज आर फॉर एंटरटेनमेंट. हाँ, तो एक स्टोरी है कि एक दिल्ली का लड़का है और एक चेन्नई की लड़की है. तो चेन्नई जाते वक्त ये लड़का एयरपोर्ट से बाहर आते वक्त वाइल कमिंग, वो लड़के का उस लड़के को धक्का लग जाता है एंड उसका जो पर्स है वो नीचे गिर जाता है. वो पर्स उठा के उसे दे देता है और उसमें उसके हाथ को उसका टच हो जाता है. तो आंखों में आंखें मिलती है. तो लड़का तुरंत बोलता है, आई लव यू, आप मुझे बहुत अच्छी लगी. वो लड़की भी शर्मा जाती है. लड़का कहता है कि आई लव यू, क्या आप मुझसे करोगी? लड़की एक सेकंड के लिए सोचती है, हाँ मगर आपको मेरे माँ से बात करनी है. एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बताइए. वो चेन्नई में वो ऐसा है, मरीना बीच के पास मेरा घर है, तो आप वहां पर आइए शाम को 6 बजे कल. एट नेक्स्ट डे वो जाता है वहां पे. तो डोरबेल बजती है, ये दिल्ली के भाई साहब अंदर आ जाते हैं. आप देखते तो सब उसकी मेहमान नवाजी हो रहा है. कोई उसे रसगुल्ला खिला रहा है, कोई डोसा खिला रहा है, कई सारे चीजें हैं. एंड वेरी कंफर्टेबली दे स्टार्ट डिस्कशंस. एंड द बॉय सेज कि ऐसे ऐसे है, तो मुझे आपको आपके लड़के शादी करनी है. तो उसके माँ बाप भी बोलते, अरे वाह वाह वाह, क्या है, कितनी खुशी की बात है, तो कब करेंगे शादी? लड़का बोलता है,
मुझे ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिला है, तो नेक्स्ट संडे उनकी शादी हो जाती है, स्टोरी खत्म। मजा आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अरे हैप्पी एंडिंग, लव स्टोरी, मतलब कितना अच्छा है, मगर फिर भी मजा नहीं आया। क्यों नहीं आया मजा? मोनोटोनस था और There is no conflict Excitement. involved in them. Excitement is missing, sir. एक्साइटमेंट इज मिसिंग, क्योंकि लाइफ में इतने आसानी से अगर किसी को कुछ मिल जाता, इतना हो जाता, तो फिर उसमें क्या मजा रहेगा? Exactly. So simply people want sex, people want opposite sex, but not easily. They need some heroism, they need some struggle, they need some value to be paid resolution. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। तो अभी हम एक मिनट का ब्रेक लेते हैं। 1 minute. Now you have to create a conflict. Now this is a practical exercise कि इसमें try to understand exercise कि अगर ये चेन्नई और दिल्ली के लड़का लड़की है, उनके अगर शादी में अगर रुकावट आती है या कोई है कि जिसके वजह से स्टोरी में दम आ जाए या स्टोरी विल बिकम वेरी वैल्यूएबल, सो नाउ यू हैव टू क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट विद इन 1 minute कि क्या हो सकता है ना। जैसे कयामत से कयामत तक फिल्म आपको याद है, उनकी शादी क्यों नहीं होती है? क्योंकि दोनों की खानदानी दुश्मनी है और फिर उसके वजह से वो दोनों बच्चों को मार देते हैं। नाउ द कॉन्फ्लिक्ट इज व्हाट? देयर खानदानी दुश्मन। फॉर एग्जांपल, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट कैन बी द कॉन्फ्लिक्ट और अ रीजन कि जिसके वजह से शादी में रुकावट आ सकती है। ओके, नाउ व्हाट आई हैव गिवन इज अ आइडिया, and from that idea now you will have to convert into the concept. So within a 60 seconds आपको जो भी आता है you just write it. पेन पेपर है ना सामने? Because it's a writing workshop. Okay, attempt करना है, 1 minute है आपके पास। Now send the message to संस्कार। कौन आंसर करने वाला है? बस हैंड रेज करिएगा, फिर मैं कॉल आउट। अच्छा, ओके, इजीएस्ट वे। हाँ, वो इजी वे है हैंड रेज। ज़ूम पे हैंड रेज कैसे करते हो सबको पता है ना। अगर नहीं पता तो मुझे टेक्स्ट करना, मैसेज ही। विवेक जी बता रहे हैं, विवेक जी बताइए। यस सर, एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि जब लड़की का बैग गिरता है तो
उसके बैग से उसका मोबाइल निकल के गिरता है और मोबाइल टूट जाता है। और लड़की बहुत ही गुस्से में आ जाती है, आग बबूला होती है, चिल्लाने लगती है, अंधा है क्या, लड़की देखा नहीं, तुम लोग के पैर फिसलने लगते हैं एक्सेट्रा, बहुत गुस्से में है। तो तब तक और लड़का शांत कराता है कि कहीं और बड़ा हंगामा ना क्रिएट हो जाए। तो हाथ पकड़ के क्या बोलता है, उसको मोबाइल लेता है और जल्दी से माफी मांगता है और बोलता है कि चलो अभी तुम्हारा मोबाइल टूट गया है, तब तक तुम अपना सिम कार्ड निकाल के उसका मोबाइल उसको दे देता है, उसका मोबाइल रख लेता है, बोलता है मैं ठीक करवा के मैं नया खरीद के तुम्हें जल्दी दे दूंगा, अपना नंबर और पता मुझे। और इसके बाद फिर आगे का क्या बात है। आप वैसे दिल्ली से है ना? सर मैं गोरखपुर से हूँ। हाँ, नेक्स्ट up we have Omkar Patil. या मुझे मेरे पास 2 आइडियाज है। एक तो है स्टैंडर्ड साउथ इंडियन टाइप, जिसमें एक गुंडा होता है कॉलेज में जो उस हीरोइन पर पहले से ही फिदा होता है और उसके पास जो कोई भी लड़का है उसे मारता है। ओके, सो हीरो को स्ट्रगल करना पड़ता है उस गुंडे के साथ, एंड उसी के बाद वो शादी के लिए हीरोइन के घर जा सकता है शादी का प्रपोजल लेके। ओके, एंड सेकंड है कि पहले से सब कुछ ठीक चला, फिर घर में जाके पता चला कि हीरोइन का एक बड़ा भाई भी है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई। ओके, भाई और बहन कुछ भी ले सकते हैं, बट उसका प्रॉब्लम क्या है कि वो एक अपंग है। आई डोंट नो हिंदी वर्ड, हैंडीकैप। ओके, हाँ, सो उसे ये स्ट्रगल करना है कि एक हैंडीकैप की शादी और उसका लाइफ कैसे होता है वो उसे उस फिल्म में समझ आता है, और उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो समझ के उसे रिजॉल्व करने की कोशिश वो फिल्म में करता है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट Next up we have Yukti Gupta. Yeah. So what I thought was they do meet at the airport and then he goes to her house when she invites him. Yukti, Sorry? On your camera, switch on your camera. Okay. Yeah. So she goes to his house. He goes to her house to meet the mom and all, and she agrees to her daughter's marriage with him. But what happens is, and he goes to his house and he's happy and stuff, but what happens is the girl he wanted to marry unfortunately dies due to some accident or something like the next day. So then the guy is faced with the dilemma after that, how much he should be involved with the family, what he should do, did he ever love her at all, stuff like that. Wow. Fantastic. Next up we have Sandhya ma'am. The girl says, I'm engaged and I don't know you. How am I going to get married to you? Okay, then the second one, she says, I'm married. That's the second option. Third is the parents say, we don't want to get married in a different caste. And then the fourth one is, we don't want the girl going overseas. We want her to be here. So the 4 options. Yes. 4 options. If I can just take forward just an idea of to the ma'am story, let's give it a modernizing tone. That when they first meet at the airport, the girl says, how are you such a creep? Like just in first sight you say I love you. I mean, and just walks away. And then there the struggle starts like a typical Bollywood movie of impressing the girl. Camera क्यों नहीं on किया? Okay, next. Yes, next up we have Vijay. Vijay sir. Okay, last one, huh? आवाज इतना नहीं Vijay. He's muted. Yes, Vijay sir, you are. I'll repeat. It's a small line. In my case, here the grandmother of the boy says no to marriage and says we cannot accept this marriage because of the linguistic and the cultural differences. And that's all.
That's where the marriage stops. So the story is to be continued from here now. What actually went wrong? I'd like to point out everyone is just willing, everyone just wants to break these two people, hero and heroine, from the starting. Can I? Yes, Shailendra sir. Next up, we Yeah. have Shailendra sir. My excitement starts at airport when boys comes to know that girl doesn't know the English or Hindi because she is from South and she knows only Tamil. So the excitement and struggle start for the boy to make her understand what he has communicated. Like an ek duje ke liye we have seen, ठीक है? Yes, in past. तो वहां से हमारी कहानी शुरू होती है कि पहले उसको समझा तो दे कि बोलना क्या चाह रहा है. So language is their barrier. Yes. So if I can go at last, sir. I guess सबका हो चुका है अभी तक. तो I'll yes, Vijay sir and Shailendra sir का हो गया अभी. तो I guess everyone is done. किसी और को कुछ कहना है तो कह सकते हो, नहीं तो मैं end No, में we are done. Please go ahead. Okay, so end में we can go like basically there can be two scenarios. पहले तो एक proper typical Bollywood scenario जिसमें एक third person है, एक लड़की जिसको अपना जो लीड कैरेक्टर है उससे प्यार है, बट अपने लीड कैरेक्टर को इस लड़की से प्यार है. तो बेसिकली देयर विल बी अ लव ट्रायंगल बिटवीन दीस थ्री एंड जो थर्ड पर्सन लड़की है शी विल ट्राई टू क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दीस टू. एंड सेकंड सिनेरियो कैसा है जो काफी सेंसिटिव सिनेरियो हो सकता है बेसिकली, कि जो लड़का है उसको एक भूलने की बीमारी हो जाती है एंड वो चीज़ों को काफी भूलने लगता है बेसिकली. सो कभी कभी याद आ जाता है कि उसकी खुद की आइडेंटिटी क्या है, बट थ्रू आउट द टाइम एट द एंड डॉक्टर भी बता देते हैं कि आने वाले कुछ सालों में सब कुछ भूल जाएगा. तो फिर भी लड़की उसके साथ रह जाती है, बट एट द एंड वो लड़की को ही भूल जाता है मूवी के एंड. बेसिकली दैट कैन बी अ रियली सेंसिटिव स्टोरी. Fantastic. So see, basically see, मतलब ये अलग अलग what you can say, अगर आपने conflicts or the reasons to break their marriage or their this thing, आपने एक कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि क्या हो सकता है कि जिसके वजह से there can be a major hurdle in their knee level. So see, when people knows about a love story, so every second feature film is a love story. So what are the elements of the love story? कि लड़का है, लड़की है, एक विलन है और फाइनली ये दोनों का मिलन है. हर एक पिक्चर में ऑलमोस्ट यही होता है फॉर्मूला. यानी कि पहले से ही हमें पता है कि स्टोरी, मगर फिर भी लोग स्टोरी देखने जाते हैं. क्यों जाते हैं? The way the story is portrayed. Different ways of saying the same story. Yes, exactly. So people goes for the experience, or you can new kind of experience of the same feeling. So जब तक हम अगर कोई भी एक नोन स्टोरी में जब तक हम उसमें कोई नया एक्सपीरियंस नहीं क्रिएट करते, तब तक people will not like to see your film or to read. So the thing is कि जब हम as a author or as a creative person, जब idea में in the process of idea, when we think about what can be the value of this idea, it means the major skill of a writer is to understand that अगर मेरे मन में कोई एक विचार आता है, मेरे मन में कोई थॉट आता है, तो उसका वैल्यू क्या है ना. तो जब किसान जब अपनी फसल या उसके वेजिटेबल या जो मार्केट में लाता है ना,
तो उसके पहले ये समझने की कोशिश करता है कि आज उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। अगर 1000 किसान सारे ओनियन लेके आते हैं वहां पे, तो ओनियन का भाव गिर जाएगा। मतलब जरूरत से अगर ज्यादा ओनियन आते हैं तो भाव गिर जाता है, मतलब उनको आने जाने के पैसे भी नहीं मिलते हैं। सो द थिंग इज कि जब हमारे मन में एक लव स्टोरी है या एक बायोग्राफी है या एक हिस्टोरिकल कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कि अगर मैं भगत सिंह के ऊपर एक बायोग्राफी बना रहा हूं और उसी वक्त इन 7-8 लोग भगत सिंह के ऊपर ही बायोग्राफी बना रहे हैं, तो अभी कितने लोग देखेंगे बार बार भगत सिंह को कैसे फांसी दी जाए। जब तक आप उसमें कोई नया एक्सपीरियंस नहीं डालते हैं, उसमें कोई नया अंदाज नहीं देते, उस आइडिया का आप एक ऐसे मूल्यांकन नहीं करते हैं कि जिससे पीपल विल गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स योर आइडिया। एंड दिस इज अ प्रोसेस। So when I say idea to screen, so when I told about a girl meeting at airport and they fall in love with each other and immediately the next day talk about their marriage. So this is a false idea. This ये idea चलने वाला मगर उसमें अगर आप कुछ वैल्यू क्रिएट कर देते हैं कि लड़की या लड़का दोनों में कुछ ऐसे घटना होती है कि जिसके वजह से that boy has to go with her to her house or his to the hospital, कि जिसमें they will get a span of time to come closer. अचानक से कोई चीज आती है तो उसमें स्पार्किंग होता है। It means you need to develop your idea in a such a way that easily you should able to evaluate that idea, and from that idea you should able to convert into the solid concrete concept. यानी जब हम ऐसे कहते हैं कि एक अच्छी संकल्पना पर हम काम कर रहे हैं, या हम समाज की संकल्प बदल रही है, या समाज में नई संकल्पना आ रही है। सो नई संकल्पना आ रही है मतलब जीने के जो संकल्पना है उसमें नए संस्कार होते हैं, नए प्रोग्रामिंग को हम अडॉप्ट करते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ लाइफ। जैसे 40 साल पहले, 25 साल, 30 साल पहले लव मैरिज करना मतलब इट वाज वेरी हीरोइक डीड। मतलब कोई आसानी से लव मैरिजेस नहीं होते, बिकॉज सोसाइटी डिडंट एक्सेप्ट इट इजीली बिकॉज ऑफ द कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। कि अगर दो भिन्न संकल्पनाएं अगर इकट्ठा आती है तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होने के 100% चांसेस होते। इसीलिए जब मैरिज होता है, जब लग्न विवाह संस्था होती है, तो उसमें ये देखते हैं कि दोनों का कल्चर सेम है। तो स्टोरी कहां पर होती है कि जहां से जब नॉर्मल चीज एबनॉर्मल हो जाती है, वहां से असल में स्टोरी शुरू हो जाती है। कोई सारी चीजें नॉर्मल है तो nobody is going to see your story। मतलब अभी न्यूज देखते हैं ना, न्यूज तो एक आदमी ने एक दूसरे आदमी की सहायता की, किसी ने ऐसी अच्छी न्यूज कभी आती है क्या? किसी ने खून कर दिया, किसी ने बलात्कार किया, किसी ने ठोकर दी, किसी ने करप्शन किया, किसी ने मतलब जितना मतलब प्रॉब्लम है भयानक से भयानक becomes a story। So in our course
first we will try to understand that how we will have to understand the value of our idea. यानी हमारे जो भी मन में विचार आए हैं, so that thought can be for a feature film, it can be for a biography, it can be for a novel, it can be for a short film, it can be for a web series or a documentary. What we need to understand first, to make it a square. What does it mean to make it a square? It means to make it a balance, to make it very adaptive. मतलब मेरा थोड़ा आइडिया रेक्टेंगल है, थोड़ा स्क्वायर है, थोड़ा राउंड है, तो वो नहीं. It means you will have to understand what exactly your idea is going to be. So it's a Punjabi guy from Delhi and a Muslim girl from Chennai, and the conflict is what कि उसमें कोरोना हो गया है और वो तीसरे स्टेज में है कोरोना के. It means what happens that what is the value? First thing is a culturally they cannot come together. Second is what कि health wise ठीक है culture भूल जाओ मगर health wise so they cannot come together. It means somehow you need to strong conflict which will have a strong value. तो strong conflict मतलब क्या है कि आपने कितना बड़ा जुर्म किया है उसके ऊपर उतनी बड़ी सजा होती है. किसी ने किसी को सिर्फ थप्पड़ मारी है तो उसके लिए क्या फांसी की सजा हो सकती है? नहीं ना. वो उसी वक्त हो सकती कि वो राजा है, राजा यार उसने उसको थप्पड़ क्यों नहीं लगाया, उसको दे दो फांसी. तो थप्पड़ नहीं लगाया तो भी अगर राजा कहता है तो फांसी हो सकती है. बट इन अ डेमोक्रेसी you will have to understand what is the value of the case. मतलब जैसे अभी यहाँ पर अपने यहाँ पर दो एडवोकेट्स है, लॉयर्स है. इट मीन्स जब आपको एज अ लॉयर आपको ये बताना है कि माय लॉर्ड इन्होंने ये जुर्म किया है तो इनको दफे 100 एंड 100 302 के मुताबिक इनको फांसी की सजा होनी चाहिए. क्यों होनी? तो ऑल दिस थिंग, ये सारे ABCD EFG ये सारे इंसिडेंसेस है जो उसका व्हाट यू कैन से एविडेंसेस है. इट मीन इन द स्टोरी व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्टिकल नंबर कि ये कौन सा आर्टिकल लगा है एंड हाउ मेनी डेज और व्हाट इज द मतलब कड़ी से कड़ी सजा इसको इसे की है ना. कोई भी अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसे कड़ी सी कड़ी सजा क्या मिलती है? यू नो, उनकी शादी हो तो वो आगे पता चलता है कि क्या है ना. एनीवे, बट स्टिल people are not interested what happens at the marriage. People are interested that what are the elements that they made these people come together to closer. Yes. So see, our story writing, our concept writing, जब हम मतलब देखो अगर राम को वनवास नहीं होता तो क्या होता? वो अगर आगे स्टोरी ने रामायण ही नहीं बनता सर. हाँ, रामायण ही नहीं बनता. हाँ, रामायण ही नहीं बनता. यानी हर एक घटना, हर एक इंसिडेंस is basically a key factor to develop the next episode. So try to understand in this course, in the next 1 month, what we will try to understand, not just the idea, we will try to understand कि हमारे मन में किस टाइप के विचार आते हैं, हम किस टाइप की पर्सनालिटी है, हमें अच्छा क्या लगता है, हमें साइंटिफिक चीजें अच्छी लगती है, इमोशनल वैल्यूज अच्छे लगते हैं, या हमें सामाजिक चीजें अच्छी लगती है, या हमें रिलीजियस चीजें अच्छी लगती है,
or we are more interested about nature, about animals. In this 1 month, first thing is we will try to understand what is our value of our thinking process. Because your thinking is the most important key factor in the creation of a content. क्योंकि जैसे जंगल बुक पता है ना, जंगल बुक जो जिसके राइटर कौन थे? रुडयार्ड किपलिंग। हाँ, रुडयार्ड किपलिंग। वो उनका बर्थ कहाँ पे हुआ था पता है? यही कहाँ पर? वो हाँ? इंडिया में थे ना बहुत दिन। वो हमारे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में पैदा हुए थे, मिट्टी में। वेयर आई स्टडी, तो उनका घर आज भी वहां पर है। So one fantastic thing about this Kipling is, you know, why he created a character like that, कि वो एक बगीरा है या वो सारी चीजें हैं, वो उसकी माँ नहीं है, उसके बाप नहीं है। So see, try to understand कि ये जो किपलिंग थे, उन्होंने उनके फादर जो बड़े ऑफिसर थे और उन्होंने एक बहुत अमीर माँ के साथ, एक लेडी के साथ शादी की इंग्लैंड में। मगर उनकी जो माँ थी वो रईस होने के कारण वो शराब और उसका जो लाइफ इतना खराब था कि वो बॉम्बे में उसके साथ आई ही नहीं। बच्चा लेके उसका फादर आया यहाँ पर, और जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, मतलब ये उसके फादर जो ये थे आर्ट से रिलेटेड आर्किटेक्ट थे, तो वहां की एक जो आया बाई रहती है ना, केयर टेकर, और वो जो बंगले के बाहर रहते थे आउट हाउस में, तो वहां पर उसकी एक छोटी फ्रेंड थी राधा, मतलब वो जो आया बाई थी उसकी डॉटर और उसके जो बच्चे थे। तो व्हाट ही, मतलब उसका ये जो था ना सिंबोलिज्म, तो ये जो सारे जो सीआर थे या जो वुल्फ्स थे, they were supposed to be Indians, and this Mowgli, he was a British guy. So आइडिया को वो किस तरह से ले, और आज पूरी दुनिया में वो छाए हुए हैं, दुनिया में उसको अलग तरह से देखते हैं, बट his own making, his own अभिधारणा was very critical. Anyway, so see, in this course, what we will try is we will try to understand step by step the process in creation of the content, creation of a concept, creation of a storyline, ultimate a storyline which will have some value. So either it will have a social value, it will have emotional value, it will have a physical value, it will have environmental value, it will have a or caste value or some other value. तो आज का जो आपका होमवर्क है, it is about a value in the story. तो आपको एक ऐसे स्टोरी का आइडिया बताना है। The story, you have to create a story or one idea which will have some strong social value or religious value or what value. कि जैसे मुगल आजम में वो कौन अनारकली, और हीरो का नाम क्या रहता है उसमें? अच्छा, शाहजहां। हाँ, सलीम। तो सलीम और अनारकली, अभी इनमें इनका वैल्यू क्या है? व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट, वैल्यू ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट? रॉयल है और एक दासी है। Exactly. So it's a matter of the class कि एक रॉयल है और दूसरी लड़की जो है एकदम वो लेबर क्लास से है। कि जैसे मैंने बताया कि कयामत से कयामत, एंड द सेम थिंग ना, सेम थिंग कि लड़की जो है शी इज फ्रॉम द रॉयल फैमिली एंड लड़का इज फ्रॉम अ थर्ड डेक। यस। तो आपका होमवर्क है कि एक पेज में
आपको आपका ये आइडिया लिखना है. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द होल कंसेप्ट और डिटेल स्टोरी और डिटेल दिस थिंग्स. और कल हम उसके बारे में बात करेंगे. तो कल जो है, कल 4:30 बजे तक आपका जो ड्राफ्ट है, आप संस्कार को या जो भी आपके इसमें है उनको आप ईमेल में आपको सेंड करना है, जितना भी आप लिख सकते हैं. ठीक है. फिर उसमें से वी विल सिलेक्ट कि डिस्कशन के लिए कौन सी लेनी है, क्या है. क्योंकि टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू कन्वर्ट आइडिया इनटू कंसेप्ट. तो आज आइडिया में नहीं आया ऐसे कोई है? नहीं यार, थोड़ा रिवीजन. यस यस, थोड़ा रिवीजन. यस. सी द थिंग इज ट्राई टू थिंक. आपको थोड़ा वक्त निकाल के आपके स्टोरी के बारे में, आपके आइडिया के बारे में सोचना है और वो आपको ईमेल करना. और संस्कार वो सारे ईमेल्स जो भी आएंगे आप मुझे फॉरवर्ड करना. हाँ हाँ, श्योर श्योर. ठीक है. ठीक है. सो आज क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की important? Can anybody revise before we close the session? What is an idea? How Okay. do you bring a value to that idea? Well, About that. Then how to convert the, how to add value in the sense you can create conflict, make it more interesting. So how to make the story more interesting by adding conflict. Conflict can be of various types. And then how to bring the idea to a concept. So that's what we have learned today. exactly. So the thing is कि आज अभी हम यहाँ पर रुकते हैं, क्योंकि इसके आगे आप कंसेप्ट देखेंगे, कोई भी स्टोरी देखेंगे, कोई भी चीज देखेंगे, तो उसमें ट्राई टू फाइंड आउट कि इसमें बेसिक आइडिया क्या है. यस. ना कि इसमें बेसिक आइडिया जब हमें समझ में आता है तो इट बिकम्स अ वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट. ठीक है. तो स्टेप बाय स्टेप हम कई सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, और जो भी हम डिस्कस करें, दिस इज अ वेरी valuable ideas and concept. And what I will request कि maximum people should involve into the discussions. आपको लगता है तो बोलिए, मन में मत रखिए. आपको जो भी कैसे भी लगता है, शायद उसमें से हमें एक नया अंदाज आ जाए, बाकी लोगों को कुछ नया अंदाज आ जाए. ठीक है. Any questions? Last के लिए, कल के असाइनमेंट के लिए, हाँ, can choose any story, or do we stick to the story that you've talked about? No. It can be any story. No, that was just a reference. It can be any story. हाँ, बस सारे इंस्ट्रक्शंस आई विल कंपाइल एंड मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा आज रात तक. ओके. यस. और अभी किसी को कुछ सवाल है तो वी कैन डिस्कस मोर 5 minutes. Yes. Regarding today's discussion, if somebody have any questions or answers, or या किसी को कुछ बोलना था वो रह गया. सर, आपने जो बोला कि story showing a social value, isn't it? Yes. Is it just one value, or could be multiple values? There can be a multiple distinct values. There can be one value ना. मतलब क्या है कि मतलब आपने पिज्जा लिया है, पिज्जा के साथ आपको थम्स अप गिफ्ट में आता है, तो वो भी, उसका भी पैसा वो थम्स अप से इससे निकाल लेते हो. Yes. Okay. Got it. Thank you. Yes. और कोई है या किसी का इंट्रोडक्शन रह गया था, वो लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन, किसका रह गया था इंट्रोडक्शन? शर्वरी का इंट्रोडक्शन रह गया था. हाँ, तो हाँ, मेरा रह गया था. तो hi everyone, I am Sharvari Kumbhar and I am from Kolhapur, Maharashtra, and I am freshie in chemical engineering department.
And basically I write because writing is a favorite pastime, and I basically used to write articles and poems, but I have never as such written a long story, and like I get ideas in between, but I was never able to complete the whole story. So I'm sure that on the behalf of, like, because of this course, I'll definitely get the motivation to complete the stories whatever I write. So that's it. Thank you Sharon. Great. आई गेस इसी नोट पे कंक्लूड कर सकते हैं आज के सेशन को. अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो प्लीज सर को पूछिए. और नेक्स्ट टुमारो जो असाइनमेंट है उसके जो इंस्ट्रक्शंस है वो सर से डिस्कस करके मैं कंपाइल करके भेज दूंगा ग्रुप पे आज रात ही. ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ लो, बट आई गेस किसी को क्वेश्चंस नहीं है मोस्टली. अगर नहीं तो पूछ लेते अब तक. सो आई गेस दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड. क्वेश्चन पूछना है तो हाथ ऊपर करो, माइक नीचे करो. ओके, गुड, थैंक यू. ओके, सो थैंक यू वेरी मच डियर. काफी अच्छा लगा पहला सेशन ही, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन था, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट so many people are interested to answer the question, and that's my expectation. आंसर नहीं करेंगे, इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ सीख नहीं पाएंगे. Yes, so tomorrow, yes. Thank you. And we'll meet tomorrow 6 o'clock. Goodbye everyone. Yes, sir. Thank you, sir. Goodbye.